हेलो बच्चों, we are now studying part 2B of the chapter linear programming. So in this video 2B, we will study how to solve the linear programming problem when it is of minimized type. In earlier video, we have solved the problem L.P.P with maximum type. समझ गए बच्चों? And we have also seen in the first introductory part as to how to formulate the problem of L.P.P, linear programming problem. चलो, so what the problem is? To minimize this function z equal to 7x plus y subject to 5x plus y greater than or equal to 5, x plus y greater than or equal to 3, x is greater than 0, greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. So this is what z is equal to 7x plus 5. This is our objective function which we are going to minimize, means optimize. Now there are two constraints. These two functions are our constraints, and x is greater than equal to 0, y greater than equal to 0. These are also constraints, popularly known as non-negativity constraints. समझ गए बच्चों? So x is positive, y is positive. So our graph will be in the first quadrant. Now these inequalities, 5x plus y greater than or equal to 5 and x plus y greater than or equal to 5, we will plot the graph of equations, equalities and decide the feasible zone. तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे. चलो, ये मैंने आपके लिए टेबल ऑलरेडी बना के रखा है. लाइन L1, दिस इज ये जो पहला इनइक्वालिटी है 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका इक्वेशन मैंने बनाया 5x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट मांगता है. सो फर्स्ट आई पुट x इक्वल टू 0, देन आई गेट y इक्वल टू 5 बिकॉज 5x प्लस वाई इक्वल टू 5. 5 into 0 plus y is 5, so y I get as 5. So I get point A on this line 0, 5. Similarly, I put y equal to 0. So 5x is equal to 5. So x I get as 1. So I get point B as 1, 0. Similarly for L2, when I put x 0, I get y as 3. When I put y 0, I get x as 3. Now these are the inequation sign. We have to decide whether it is on origin side or non-origin side. How we do this? Let us consider inequation 5x plus y is greater than or equal to 5. Now I put x equal to 0 and y equal to 0 in this inequality. So मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगा? 5 into 0 plus 0 will be 0 and right hand side तो है ही ऐसा 5. So these are the coordinates of origin. Are they satisfying this? No. They are not satisfied. तो अभी देखिए हमारा ग्राफ तो बन गया. This is y axis,
दिस इज एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉइंट ए है विच इज 0,5, ये मेरा पॉइंट बी है विच इज 1,0 एंड दिस इज द लाइन, बराबर है बच्चों, दिस इज द लाइन L1. इज इट सेटिस्फाइंग द ओरिजिन्स? इज ओरिजिन सेटिस्फाइंग दिस लाइन? मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0, 0, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो इट बिकम्स नॉन ओरिजिन साइड, मतलब opposite side of origin. So this is my non-origin side. Similarly, if I put x equal to 0 and y equal to 0 in this second inequality, it is also not satisfying. So it will be also non-origin side बच्चों, दोनों are non-origin side. So let us plot the graph now. ये मैंने टेबल बनाया, वही टेबल है, x axis, y axis, origin. Now first I will plot the point A. Y axis पे point A आया 0,5, Z axis पे point आया 1,0. Now don't wait and plot point C and D. If you plot all 4 points, then you may mistake in drawing the line. So immediately I have drawn the line AB, that is nothing but line L1, और उसका जोन कैसा आएगा, फिजिबल जोन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन. समझ गए बच्चों? नाउ आई विल ऑल्सो प्लॉट लाइन L2. दिस इज पॉइंट C 0,3, दिस इज पॉइंट D 3,0 एंड दिस इज लाइन L2. समझ गए बच्चों? दिस इज लाइन L2. इसका फिजिबल जोन कहां है? अगेन नॉन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ऑपोजिट. समझ गए बच्चों? तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फिजिबल जोन विच इज कॉमन टू बोथ L1 एंड L2. मतलब it will satisfy L1 also and it will satisfy L2 also. Now, can this zone satisfy? No. This can satisfy L2, but it cannot satisfy L1 because ये L1 के opposite side में. Can this zone, ये जो triangle है, can this satisfy? No. So we have to have a zone which is satisfying both L1 and L2. So my feasible zone will be this yellow. It is satisfying both L1 and L2. समझ गए? So this is my feasible zone. Now we know बच्चों, x is positive, तो यहां ऊपर है, y is positive यहां है, और ये फिजिबल जोन इस बाजू तो इंफिनिटी को जाएगा, इस बाजू भी इंफिनिटी को जाएगा, लेकिन हमें इंफिनिटी नहीं मांगता है. वी हैव टू सी द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल जोन. सो विच आर द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल जोन बच्चों? ये फिजिबल जोन का कॉर्नर है पॉइंट ए, पॉइंट पी and point D. So our function, objective function, will be minimum at one of these points. तो हमें A के कोऑर्डिनेट मालूम है, x is 0, y is 5. हमें D के कोऑर्डिनेट मालूम है, x is 3, y is 0. हमें P के कोऑर्डिनेट, this is point P. ये P के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है क्या? नहीं. बट वी नो पॉइंट P लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. सो वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, दैट इज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन, एंड वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. चलो वो हम करेंगे अगली स्लाइड में. सो to find coordinates of point P, we will solve
the equations of L1 and L2 as simultaneous equation. समझ गए बच्चों? तो this 5x plus y equal to 5, this is the equation of L1. X plus y equal to 3, this is the equation of L2. तो हम लोग क्या करेंगे? We need not multiply anything because this is y here, this is y here. So I deduct L2 from L1, minus x minus y minus 3. 5x minus x is 4x. Y and y gets cancelled. And this I get 5 minus 3 as 2. So x I get 2 upon 4 means x I get as 0.5. समझ गए बच्चों? सिंपल है ये इक्वेशन. Now put x is equal to 0.5 in L2. तो क्या मिल जाएगा हमें? x is equal to 0.5. यहां हम लोग क्या करेंगे? x plus y is equal to 3. 0.5 plus y is equal to 3. So y I get as 3 minus 0.5 as 2.5. तो हमें p के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बच्चों? पॉइंट p we get as x कोऑर्डिनेट 0.5, y कोऑर्डिनेट 2.5. समझ गए बच्चों? So now we know coordinates of A, coordinates of P and coordinates of D. So our objective function will be minimum at one of these points. मतलब at point A that we have seen or point P और पॉइंट डी. समझ गए बच्चों? चलो ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग. हमें क्या करना है? मिनिमाइज, नॉट मैक्सिमाइज, मिनिमाइज z इक्वल टू 7x प्लस वाई. चलो यहां हमने पॉइंट A लिया. x का कीमत है 0, y का कीमत है 5. सो इफ आई पुट इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन x equal to 0 and y equal to 5, I get z as 5. This is at point A. Similarly, at point P, when I put x equal to 0.5, y equal to 2.5, I get z as 6. And when I put at point D, x is equal to 3 and y equal to 0, I get z as 21. So which is my minimum z? That is what I want to do. This is my minimum z. So I have got minimum z at point A when x is equal to 0 and y is equal to 5. And that is what is my answer. Z is minimum at point A when x is equal to 0 and y is equal to 5. And what is the minimum value of z, बच्चों? 5. This is my answer. समझ गए बच्चों? तो हमने अभी तक फंडामेंटल सब सीखे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के. हाउ टू फॉर्मुलेट द L.P.P, that is linear programming problem. How to find the maximum value of objective function, how to find minimum value of objective function by using graphical method. In part 3a, 3b, 3c, we will study more complex examples of linear programming. Method is same, only the examples will be slightly more complex. तो आप
पार्ट 3A 3B भी देखो। समझ गए बच्चों? और जैसा कि मैंने बोला है, ऑल माय वीडियोज आर इन द प्लेलिस्ट chapter wise and they are numbered also 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B like that. So you have to see those serially. समझ गए बच्चों? Thank you.